Can you see the PPT, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are live, ma'am. So hello students, sorry again for the technical glitches, electricity problems and all. Online classes में थोड़ा ये problem आजकल ज़्यादा हो रहा है. I'm really sorry for that you missed your classes, but I promise that we will continue. You know, even we can extend the classes. So whatever the classes we had taken till now, the classes will be extended. So I hope the PPT is visible for you guys. So we had seen law of demand and law of supply. In law of demand, if you remember, we were talking about the downward sloping curve. We were saying that the price will increase, the quantity demanded will be decreasing. And supply curve was upward sloping when we were saying the price will increase and to earn the profit, the quantity supplied will be increasing. Because ज़्यादा supply पर, you know, अगर ज़्यादा price है, तो you know people will get like producer will get more of the profit, so they will try to supply more. So law of demand, just because we will be doing, I think, elasticity of demand, and then we will do elasticity of supply in next class. And so today we have to do the elasticity of demand. So just a little bit revision of that law of demand, which states that if prices of the commodity increases, quantity demanded will fall. And if price of the commodity falls, quantity will increase. So that you have to, like, it is a inverse relationship. It is not the direct one, and that is a downward sloping curve. Law of demand में जो demand curve होता है वो downward sloping होता है, and price increase होते ही जो quantity demanded होती है वो decrease हो जाती है. So law of demand indicates that only direction of change in quantity demanded in response to change in price. देखो क्या होता है, like as the price increases, we tend to decrease the quantity demanded of that commodity. But ये simple ये बता रहा है कि increase हो रहा है या decrease हो रहा है, you know, price सिर्फ direction में change बता रहा है. But the elasticity of demand states that how much, you know, or what extent the quantity demanded will change. Suppose करो एक किसी भी commodity का X का price बहुत ज़्यादा increase हो जाता है. Like suppose करो 10% increase हो जाता है. So how much, you know, quantity demanded will decrease. We law of demand states है जैसे price बढ़ेगा, definitely the quantity demanded will decrease. But कितना decrease होगी? 10% hike के बाद कितना quantity demanded decrease होता है. So that is like clear by that elasticity of demand, which states that with how much or to what extent the quantity demanded will change in response to the change in any other determinants. So price के change में कितना हम कितना respond कर पा रहे हैं, like it is a sort of response, like how much response we did. So elasticity is simple responsiveness. So suppose करो if price rises by 10%, then what happens to demand? We know demand will fall. इतना तो पता है because law of demand states that it will fall. But by more than 10%, by less than 10%, or elasticity measures the extent to which demand will change. अगर हम suppose करो 10% hike हुआ है prices में, and what do you think, like quantity demand decrease होगी by 10% only, by less than 10% or equal? So ये जो proportion है, in what proportion we will give the response to the price change, so that will be decided by the elasticity. That's why the very elasticity का जो concept होता है, that is very important. That's why. So meaning and definition is what? Elasticity of demand measures that the extent to which quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of the quantitative determinants. Suppose करो price अगर बहुत कम हो जाता है किसी का, तो वो quantity हम कितनी ज़्यादा purchase कर सकते हैं. But definitely that like it will depend on our elasticity. Elasticity means हमारे responsiveness पे, and every individual is different. So यहाँ पर other factors को हम ceteris paribus रखते हुए we will just talk about the price change over here. So we have several types of elasticity of demand according to the source of the change in the demand. For example, if the price of the source of the change, we have the price elasticity of demand. Suppose करो जो भी responsiveness है quantity demanded में, मतलब quantity demanded जो है वो decrease हुई है या increase हुई है due to the change in price, तो हम उसको बोलेंगे price elasticity of demand. Means we gave the response to the price change. So price change हुआ, that's why we decreased or increased the quantity demanded. So the elasticity of responsiveness of demand in a market is like small, and according to the amount demanded increases much or little for a given price, and it diminishes much or little for a given rise in price. Suppose करो elasticity अगर बहुत ज़्यादा है, like elasticity हम simple बात करें, that is a responsiveness, our flexibility to change our quantity demanded, whatever we are demanding. So we were demanding X commodity और X commodity का price change हुआ 10% hike. अब 10% hike होते ही our response जो automatic होगा that will decrease, we will reduce that commodity, that quantity demanded. But like अगर 10% hike होते ही हम बहुत ज़्यादा quantity change कर देते हैं, like बहुत ज़्यादा quantity कम कर देते हैं, it means that our elasticity is more. But अगर 10% hike हुआ prices में
ये सपोज करो कि 10% हाइक होते ही हम क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. लाइक आवर रिस्पॉन्स इज वेरी लिमिटेड, यू नो, वी कैन नॉट चेंज आवर क्वांटिटी डिमांडेड. सो दैट इज मीन्स लाइक आवर डिमांड इज इनइलास्टिक. ओके, एंड अगर जितना 10% हाइक हुआ प्राइसेस में, सपोज करो उतना ही 10% चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ, देन इट शोज दैट आवर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. सो ये एक यूनिटरी इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं. सो ये चीजें माइंड में रखिएगा, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट. So according to the source of the change, the following type of elasticity of demand can be mentioned. Suppose करो price elasticity of demand. Price elasticity of demand क्या होती है? Due to the change in price, the responsiveness to the quantity demanded. Like how much quantity we are changing due to the price change. Cross elasticity of demand. देखो तो elasticity in relation to the change of the price of other goods and services. Cross elasticity means होती है mean if we will see complementary goods या substitute goods. Suppose करो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर हम सब्स्टिट्यूट्स का देखें, देन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ टी और कॉफी. ओके, वी आर जस्ट टेकिंग टी और कॉफी एग्जांपल, दैट इज लाइक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज हॉट बेवरेजेस हैं. सो सपोज करो देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ टी, यू नो, वी विल ट्राई टू शिफ्ट आवर क्वांटिटी डिमांडेड टू कॉफी. वी विल डिमांड मोर कॉफी, वी जस्ट नीड अ हॉट बेवरेज, यू नो, सो दैट्स व्हाई वी विल शिफ्ट आवर डिमांड टू कॉफी. So due to the change in price of X commodity, that is T, we change the quantity demanded of coffee, that is commodity Y. So एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है और उसकी वजह से सेकंड कमोडिटी की डिमांड में चेंज हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी. अब सपोज करो, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? लाइक सपोज करो कार है तो पेट्रोल लेना ही है या डीजल, व्हाटएवर. सो इफ वी आर परचेजिंग अ कार, वी हैव टू परचेज द पेट्रोल. ओके, not in the case of electric ones, electric vehicles, but we are talking about here car and petrol, they are the complementary goods. Or just think about like bread and butter. So whatever the bread we are purchasing, we have to purchase, you know, butter also. So when in complementary goods में क्या होगा? Complementary goods में अगर किसी भी एक commodity का price quantity demanded हम decrease करते हैं, you know, other commodity की भी जो quantity demanded है वो decrease हो जाएगी. So suppose करो if there is a increase in the bread prices, then there will be, you know, like decrease in the bread's demand and also for the butter demand. So whenever there is a decrease in the cars prices, there will be a decrease in the petrol prices. I'm not talking about the economic problem right now. I'm just giving you the example of the complementary goods. So just be clear when you are thinking. It's not. I'm not giving you the solution of, you know, decreasing petrol prices. So don't do that. So in complementary goods, अगर एक का प्राइस कम होता है, दूसरे की मतलब एक की डिमांड बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी. बट इन सब्स्टिट्यूट्स व्हाट वी वर टॉकिंग क्रॉस इलास्टिसिटी में, सब्स्टिट्यूट का क्या होगा? अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो वी विल शिफ्ट टू द सेकंड कमोडिटी. सो एक के प्राइसेस बढ़ने पर हम दूसरे की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज वी विल शिफ्ट टू द अदर गुड. अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वी विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूट. आप सपोज करो, अब आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो इनकम इलास्टिसिटी टेल्स बाय लाइक हाउ मच इनकम डू वी हैव. Suppose karo you are just earning 10,000 rupees right now, or you are just like having you know, your pocket money is like 2,000 or 3,000, just that, or make it like 5,000. I don't want to be miser. So 5,000 is what, like that is your income. So right now, if you think like you will be having 10,000 income, then you can purchase more of the products. So when your income rises, you know, your quantity demanded also rises for the normal goods. Normal goods, necessary goods, and luxury goods, given goods. We will talk about it later. Okay. So right now we are just concentrating on when our income increases, our demand for the normal good increases, because you know unsaturation है हम लोगों के अंदर, like human nature क्या बोलती है, we want more and more goods, so we want to purchase more. So जैसे हमारी income बढ़ेगी, we will tend to purchase more things. Now advertisement elasticity of demand, the elasticity in relation to the advertisement expenditure. देखो ये यहाँ पर मतलब that is not like actually coming in the exam, but I just wanted to tell you about this because advertisement expenditure क्या होता है, कोई भी company, you know, they are just spending in the advertisement just to sell their product in the market and to increase the sale of the market, the sale of the product. So जितना आप expenditure मतलब जितना अच्छे से अच्छा advertisement होगा, you know, उतना उसका sale बढ़ेगा, and you know that quantity demanded will increase. अब suppose करो, I'm just I'll give you the example of Colgate, like because you go to the market and Colgate और Pepsodent एक ऐसे brands हैं जिनका advertisement expenditure बहुत ज़्यादा है. You will see, you know, regularly coming on like TV or whatever, like social media right now we have. So you will see Colgate and Pepsodent, and suddenly you go to the market and you tell to the shopkeeper, even without intending, you know, to ask for the Colgate or Pepsodent, you just, you know, just say that, you know, because it is in your mind. So the advertisement expenditure, you know, it creates that impact on your perception, and you unintentionally, you know, demand that product only. So as the advertisement expenditure will increase, the demand for that commodity will increase. So ये भी यहाँ पर भी हम उस elasticity को कहेंगे advertisement elasticity.
Ab right now we will talk about the different elasticity. One is perfectly elastic, second is relatively elastic. मतलब थोड़ा कम है, मतलब perfectly elastic तो मतलब पूरा response है अच्छे से, like perfect response है. But when we talk about relative elastic, it means थोड़ा कम response हम दे रहे हैं price change को, whatever the variable is there. Unitary elastic means प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हमने लिया था, अगर 10% हाइक हुआ प्राइसेस में, देन 10% क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, तो इट इज मींस 10/10 लाइक 1. सो यूनिटरी इलास्टिक. सो रिलेटिवली इनइलास्टिक मींस थोड़ा इलास्टिक है, थोड़ा कम इलास्टिक है, कम इनइलास्टिक है मींस परफेक्ट इनइलास्टिक, मतलब बिल्कुल डिमांड चेंज नहीं हो सके. सो नाउ वी विल इवन टॉक अबाउट द एग्जांपल्स एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, there will be a direct question from this कि price elasticity of demand, what is the elasticity of demand, and you have to explain the price elasticity of demand, and if the prices of some commodity increases, then what will be the price elasticity of that commodity. So abhi we will talk about the formulas also. Now, price elasticity of demand is a measurement of the percentage change in demand due to the percentage change in own prices of the commodity. So the price elasticity of demand may be defined as the ratio of the relative change in demand and price variables. Suppose karo, like there is a percentage change in demand due to the percentage change in the own price of that commodity. So we will just count the percentage, like how much percentage change is there in the price. किसी भी commodity का price, suppose करो अभी पेट्रोल, चलो पेट्रोल नहीं लेते because that is inelastic demand. Like suppose करो कि हम कोई भी ऐसा product लेते हैं that is a normal one, and we will just talk about maybe Levi's jeans. So you know, अगर Levi's jeans का price hike हो जाता है बहुत ज़्यादा, या 20% हाइक हुआ, तो 20% ही लिवाइस जीन्स की जो परसेंटेज जो है डिमांडेड वो डिक्रीज हो गई. सो दैट वी विल टॉक अबाउट लाइक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए विच फार्मूला वी यूज, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज. मतलब रेशियो ऑफ द रिलेटिव चेंज इन डिमांड एंड प्राइस वेरिएबल्स मींस हाउ मच चेंज वी हैड इन द प्राइस वेरिएबल एंड हाउ मच चेंज वी हैव इन द क्वांटिटी डिमांडेड वेरिएबल. सो द परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage or proportional change in the price, that is the formula of elasticity. It is so easy, like you have to just calculate the percentage, like just divide one percentage to another. Right now, don't be afraid of the diagram, like sorry, the numerical, whatever it will come, the formula. So the price elasticity is percentage change in quantity demanded or percentage change in price. But right now, if we have to calculate the percentage change of the quantity demanded, it means the change in quantity upon original quantity into 100. That will be the percentage change in the quantity. That is the formula of percentage change in particular variable. Or particular like percentage change in price means change in price upon original price into 100. Means पहले हमारा original price क्या था, उसके बाद price क्या change हुआ, and then into 100. We have to just calculate that percentage change. So this formula is very important, and this is like normal formula, that is delta Q upon Q into P upon delta P. So that is the formula of elasticity, and there can be direct numericals. आपको digits दिए होंगे, मतलब जो भी values हैं वो दी होंगी आपको, you have to just put it there and you have to calculate the elasticity. अब suppose करो, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि there is a question like elasticity of calculate the elasticity, price elasticity of whatever, like okay, just think about the petrol. Okay, so calculate the change in elasticity of the petrol. So if we will like see that there was earlier price was this much and now the price is this much, and पहले पेट्रोल की डिमांड इतनी थी और अब इतनी डिमांड हो गई है, so then we will just keep the values over here in this formula and we will get कि like how much elasticity is there. पेट्रोल की डिमांड चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है, रिस्पॉन्सिव कितना होगा. So देखो, इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है that is very important for the producer. प्रोड्यूसर साइड पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो प्रोड्यूसर जब भी ये सोचता है कि उसे अपनी कमोडिटी का ही वांट्स टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी टू अर्न प्रॉफिट. सो वो ये सोचता है कि अगर मैंने प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिए तो कहीं क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा कम हो गई तो सेल तो कम हो जाएगी, मेरी सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. The thing is, that's why producer has to be very careful in increasing the prices. और इसी तरह से like जो मार्केट है वो वर्क करता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक किसी भी प्रोडक्ट की जानना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में कोई भी प्राइस के मूवमेंट में आने से पहले. So in any way, like if we are increasing the price of some particular public transport, then the impact will be like there will be a less use of the public transport. So वहाँ पर responsiveness क्या है लोगों की, like will people prefer still to go by or use the public transport to commute, या वो बिल्कुल वहाँ से हट जाएंगे या कुछ और प्राइवेट व्हीकल को यूज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. सो हाउ मच विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस. आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस नाउ. अब वी वर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो जब डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो डिग्री इज व्हाट, लाइक 5 केसेस वी वर टॉकिंग अबाउट: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक.
Now we will see the different sort of diagrams for each sort of elasticity. Okay, suppose if there is a perfectly elastic demand, means whatever the price, और प्राइस में कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज डिमांड चेंज हो सकती है. डिपेंड्स ऑन योर नीड, लाइक एनी ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, ऑन अ गिवन प्राइस, एनी डिमांड और योर क्वांटिटी डिमांडेड कैन चेंज. वट एवर द क्वांटिटी यू वांट टू हैव, यू कैन हैव दैट. सो व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉजेज अ मेजर चेंज इन डिमांड, मतलब छोटा सा प्राइस का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज कर देता है. और देयर इज लाइक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स योर डिमांड कैन चेंज. A small rise in price results to the fall in demand to zero. A perfectly elastic demand go, how do we refer to the situation when demand is like infinite at the prevailing prices. अब आप ये जो diagram है, like if you can see my cursor over here, like vertical axis पे we had taken the price, horizontal axis पे we had taken the quantity demand. So suppose करो right now we have this much of price, so price is not changing at all, but just see our demand, that is Q1, Q2, Q3 and whatever, like infinite it can be. So यहाँ पर जो हमारी जो डिमांड है वो लाइक परफेक्टली चेंज हो सकते हैं. सो इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन द फॉल इन डिमांड टू जीरो. मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस इंक्रीज हो गया देन वी विल जस्ट डिमांड जीरो हो जाएगी हमारी. और अगर प्राइसेस थोड़े से भी कम हो गए सो वी विल इंक्रीज द क्वांटिटी टिल द इन्फिनिटी. सो द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प्स इन डिफाइनिंग द शेप एंड द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व का हम स्लोप क्या देख रहे हैं, दैट इज अ डिमांड कर्व. तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक के केस में हायर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द डिमांड कर्व. सो दिस प्राइस लाइन जो हमने लिखी हुई है, दिस विल बी आवर डिमांड कर्व, बिकॉज ये क्या बता रहा है हमें, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज. सो हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक मोर द इलास्टिसिटी, फ्लैटर द डिमांड कर्व. सो दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि जैसे जैसे इलास्टिसिटी कम होती जाएगी आवर डिमांड कर्व विल बी स्टीपर, और फ्लैटर जितना हमारा डिमांड कर्व होगा इट मीन्स दैट आवर इलास्टिसिटी इज इंक्रीजिंग. Perfectly inelastic demand. अब देखो we had talked about the perfectly elastic, that was a flatter, and this is a perfectly inelastic where we are saying that we will not change our demand at all. So perfectly inelastic demand is one in which change in price cause no change in quantity demanded. मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है सपोज करो, बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, फॉर परफेक्टली इलास्टिक आल्सो, लाइक जस्ट थिंक अबाउट द एग्जांपल्स. इफ एनीबडी कैन गिव मी द एग्जांपल एंड जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स. एंड हियर आल्सो परफेक्टली इनइलास्टिक. अब सपोज करो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक का दे देती हूँ, देन यू कैन थिंक ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो इन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जस्ट सपोज करो कि कोई पर्सन एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू अल्कोहल और समथिंग, मे बी एडिक्टेड टू सिगरेट्स और अल्कोहल. सो वट एवर द चेंज इन द प्राइसेस, पर्सन विल नॉट चेंज देयर डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन. सो वट एवर द चेंज इन प्राइस, देयर कैन नॉट बी एनी डिक्रीज और इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. सो हियर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा. लाइक सपोज करो मैं आपको जस्ट एक नियर बाय एग्जांपल दे रही हूँ अल्कोहल का. सो हियर और यहाँ पर इनइलास्टिक में हम ले सकते हैं बिकॉज प्राइस डिक्रीज की भी बात करिए. या वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट. अब सपोज करो सॉल्ट आप जितना यूज करते हो दैट इज अ नेसेसिटी. इन नेसेसिटी गुड केस, सो बिकॉज वो नेसेसिटी है, सो दैट्स व्हाई सॉल्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जितना क्वांटिटी में आप सॉल्ट खरीदते हो आप उतना ही खरीदोगे. अगर सॉल्ट का प्राइस कम भी हो जाता है तो यू विल नॉट परचेज मोर सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट का जो यूजेज है वो उतना ही है जितना पर्टिकुलरली आप हर मंथ में यूज करते हो. यू विल नॉट, अगर प्राइसेस कम हो गए सॉल्ट के तो यू विल नॉट इंक्रीज सॉल्ट इनटेक, ऐसा नहीं होगा. सो दैट इज अ नेसेसिटी गुड. तो हम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जहाँ पे प्राइसेस कितने भी चेंज हो जाएं बट द डिमांडेड, द क्वांटिटी डिमांडेड वोंट चेंज. सो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. अब सेम परफेक्टली इलास्टिक का आई एम गिविंग यू द लाइक little bit of mind exercise. Just सोचो आप perfectly elastic का क्या होता है and you can put in the chat box. अब now it can be interpreted like from figure, this figure like P1, P2, P3, there are different prices. We are seeing this vertical line, that is our demand curve because that is not changing by change in any price. Like price hike भी हो रहा है तो भी इतनी demand है, price कम हो रहा है तो भी इतनी demand है. So here the demand remains constant by any value of price. So that is called perfectly inelastic demand. It is a theoretical concept and cannot be applied in a practical situation. However, in case of essential good, जिसका मैंने अभी salt का example दिया, such as salt, the demand does not change with change in price. Therefore, the demand for essential good is perfectly inelastic. देखो essential goods जो होते हैं और वो भी हर individual के लिए अलग हो सकता है. But salt is a common example, perfectly inelastic demand का. ऐसे ही आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब एग्जांपल जो रियल लाइफ एग्जांपल होगा वो ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बट स्टिल यू कैन थिंक ऑफ. ओके, आपको और दूसरे पार्ट्स के इलास्टिसिटी भी आप समझ लो, देन मे बी यू विल बी एबल टू. सो नाउ यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है?
when the proportionate change in demand produces the same change in the price. जैसे मैंने बोला था आपको, if there is a 10% hike in prices, there will be a 10% decrease in the quantity demanded. So what we are seeing here, there is a equal and the proportionate change, same proportion में change हो रहा है. So the demand curve for unitary elastic demand is represented as a rectangular hyperbola. अब ये जो rectangular hyperbola का मतलब क्या है? We are seeing over here on the vertical axis, if you can see my cursor guys, that P1 P से P1 हुआ है, like price अगर इतना decrease हुआ है तो ये वाला जो area है, like P से P1 तक का जो movement है वो same है जो Q से Q1 का movement है. Means there is a 10% decrease, there is a 10% increase. So if और यहाँ पर अगर suppose करो it's a vice versa, like P1 से P इतना P पर पहुंचा है तो इतना increase हो गया prices में, तो quantity Q1 से Q पर इतना ही same decrease हो गया. So that means in the same proportion change, right? If there is 10% hike in the prices, we are getting 10% less of quantity demanded. Like 10% में ही हमारा जो quantity demanded है decrease हो गया. So that is called unitary elastic demand. अब relatively elastic. Relatively elastic में means we are understanding that it refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in the price of a product. Suppose करो we were saying कि prices में जो 10% change हुआ था, so उससे ज़्यादा change quantity demanded में हो गया. So mathematically, relatively elastic demand is known as the more than one unit elastic. Suppose करो price में अगर 10% change हो रहा था पहले and we were changing the quantity demanded 10% decrease हो रही थी. So now there will be a more change, more than one. तो जो relatively elastic demand है वो more than one होगी. Okay? So mathematically, if you have to tell that something or किसी भी particular commodity का demand more than one है, तो it means that it is called relatively elastic demand. So if the price of a product increases by 20% and the demand of the product decreases by 25%, then the demand will be relatively elastic. ठीक है? तो हमारा 20% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम एग्जैक्ट 20% होता तो वो यूनिटरी इलास्टिक होता. सो अगर हमारा 20% से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज 25%, दैट इज मोर देन वन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक. Now in this the demand is more responsive to the change in price. यहाँ पर देखो generally when we can change और mostly substitutes के केस में देखा जाता है कि relatively elastic demand होती है. Because अगर आज चाय का price बढ़ जाता है, so we will go to the coffee. We will not purchase much tea. So that is means like tea का जो demand है वो actually में relatively elastic demand है. Because उसके पास उसके substitutes ज़्यादा हैं. तो जितने ज़्यादा substitutes market में available होंगे, उतना ही हमारा जो demand होगा वो relatively elastic होगा. Relatively inelastic. Suppose करो like there is a more change, like maybe more than 20% change in prices, but very less change in quantity demanded. So यहाँ पर हम maybe we can take the alcohol example. So addiction का example हम यहाँ पे ले सकते हैं. So relatively inelastic demand is one when the percentage change produced in demand in less than the percentage change in the price of a product. So prices ज़्यादा change हो रहे हैं. You can just see the difference over here. अब देखो मैंने कहा था ना like जैसे जैसे हमारी inelasticity होती जाएगी वो हमारा curve steeper होता जाएगा. First we got the more the elastic, flatter the curve. So वो बिल्कुल straight line था, horizontal line. Here if we will see that D is like what? It is steeper. So there will be more change in prices and very less change in quantity demanded. So the numerical value of relative elastic demand ranges between 0 to 1. So ये 0 to 1 से होती है and 1 से कम होगी. Because अगर हम पहले जो example ले रहे थे कि 10% का जो change था, equal अगर हो रहा था 10% change in quantity demanded, then it was unitary elastic. But अगर 1 से कम होता है, like सोचो 10% price hike हुआ, but quantity demanded only 5% change हुई. So that is like less than the price change. So यहाँ पर हम उसको बोलेंगे relatively inelastic and that will be lesser than 1. So हम इसको denote कैसे करेंगे? Elasticity of demand is lesser than 1. Okay. So Marshall has termed relatively inelastic demand as elasticity being less than unity. Less than like unity say, because unity what we are considering same proportionate change in price and quantity demanded. But 1 से ज़्यादा होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको? There is a relatively elastic demand. 1 से कम change होता है तो it means that relatively inelastic demand. I hope that is clear to you guys. There is just one diagram, very colorful diagram you will see over here. Like flatter the slope of the demand curve हम बोल रहे थे higher the elasticity. So you can see that different colors हैं सब में आप मतलब खुद guess कर सकते हो. If we could interact, I would have been like asking you that thing from you. But that blue line you see, the blue line is what? Perfectly elastic. And red line you see, that is perfectly inelastic, that cannot be changed. Now we are just changing the steeper, like we are changing the slope of the curve. अब जैसे जैसे curve steeper हो जाएगा, वैसे वैसे elasticity कम होती जाएगी. So सबसे ज़्यादा elasticity किसकी है? Blue curve की. Then उससे कम elasticity है purple की. Then उससे कम elasticity है green curve की. And then
सबसे कम है दैट इज ऑफ येलो, और फिर बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, दैट इज परफेक्टली नासिक, दैट इज रेड. सो वी विल जस्ट गो लाइक दिस. आई होप यू विल रिमेंबर फ्लैटर द कर्व, दैट इज अ ब्लू कर्व. स्टीपर जैसे होते जाएंगे, वी विल हैव लेसर इलास्टिसिटी, एंड देन यूनिट लाइक परफेक्टली इन इलास्टिक दैट कैन नॉट बी चेंज एट ऑल. आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइज. सो पहले मैं ऐसे करती हूँ, लाइक मैं अभी आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ 5-10 मिनट मोर, देन आई विल गो फॉर दिस. So if there is a chat, okay, just wait for a moment because it takes a lot of time, this Team application. I really don't like this application at all. I'm really sorry, I'm saying on an online platform, but I don't like this application. It takes a lot of like space on your disk, and that's why it's very slow, and sometimes it's there like I'm waiting for the class but it is not being opened. So इस वजह से आपकी क्लास 2 क्लासेस तो आपकी इस वजह से भी मिस हुई हैं. गुड मॉर्निंग मैम. विच बुक टू रेफर? मैनक्यू का बुक मैंने आपसे बोला था, और मैं एक बार टीम पर चेक कर लेती हूँ अगर आप लोगों का ग्रुप बन गया है. अदरवाइज लाइक आई विल जस्ट गिव दिस पीपीटीज एंड द पीडीएफ टू द टेक्निकल गाइज, दे विल प्रोवाइड यू. ओके, मैनक्यू की बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू परचेज. इतना ज़्यादा मनी क्यों खर्च करना. सो जस्ट सेव योर मनी गाइज एंड टेक द पीडीएफ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सॉरी. Okay. Please share your number to ask any doubt. Dear, if I'll share the number, there are like 196 attendees right now, 200, and if 200 students will be calling me in a day, like that will be very, problematic thing. So it's better to connect on Team itself. Guys, I hope that you understand, because Astro has a big platform. And यहाँ पर group, I think technical people were telling that they are making the groups. Ma'am, what is the book name? ManQ. That is a ManQ book. I will share it with the technical team, and I think they will. Ma'am, please make a group. Yes, Gopal, I'm just trying to make a group because that only can be done by the technical team. I'm just a teacher over here. I'm delivering the content, but the technical team will do that. Okay, ma'am. Right now, petrol prices are rising, and according to the complementary good, the car price should decrease. But it is complementary goods में तो कार के भी prices बढ़ेंगे ना. अगर एक का सपोज करो, एक जो डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी उतना ही बढ़ेगी, लाइक उसके भी जो डिमांड होगी वो उतनी ही बढ़ेगी. सो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने पर पेट्रोल की जो डिमांड है कम होती है, तो डेफिनेटली जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी भी डिमांड कम होगी. people will try to shift to the maybe electric cars or something, और जितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे. तो आपने देखा होगा लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल टेंडेंसी. अगर पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं फॉर सम किलोमीटर, इफ वी सी दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल, देन वी वोंट टेक आवर प्राइवेट कार. व्हाई विल वी वेस्ट आवर मनी इन पेट्रोल? सो दैट्स व्हाई जब पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जो पेट्रोल कार्स होती हैं उनके भी जो डिमांड में बहुत फर्क आता है, वो भी कम हो जाती है. सो पीपल ट्राई टू गो, पर अभी तो पेट्रोल और डीजल में चेंज ही नहीं रहा है प्राइसेस में. देयर इज नॉट मच डिफरेंस. सो वो सिंपल 5 years का जो अभी डिफरेंस है कि एक पेट्रोल 15 years तक चलेगी कार और 10 years तक डीजल कार्स चलेंगे. दैट्स व्हाई वी आर अलाउइंग, वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द पेट्रोल कार्स. अदरवाइज देयर इज नो मच डिफरेंस इन द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस nowadays. But definitely the market is shifting towards electric cars right now, and people who cannot afford that much of petrol or that much of expenditure on petrol, so that's why they are tending towards electric cars, or maybe the public transport they will use. देखो क्या होता है ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का फेल नहीं हुआ है. नो, इट कैन नॉट. इट इज अ जनरल प्रिंसिपल वी आर टेकिंग इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड वी आर कंसिडरिंग एवरी अदर फैक्टर एज अ ceteris paribus सिचुएशन. देखो जब भी इकोनॉमिक्स क्या है ना, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वी कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग एट वंस. सपोज करो अगर आज पेट्रोल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो देयर आर अदर रीजंस आल्सो. सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का वहाँ पे रीजन नहीं चल रहा है. देयर इज अ जियोपॉलिटिक्स, देयर इज लाइक सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मे बी सप्लाई क्रंच, देयर इज अ मे बी whatever the things are there, like which is coming in the news nowadays. So there are many reasons. We are just making it as a ceteris paribus situation. We are talking if the prices of one product increases, the quantity demanded of that product will decrease. और स्पेशली लाइक अगर यहाँ पे भाई किसी की मतलब हम यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर की भी बात नहीं कर रहे हैं. इंडिविजुअल कस्टमर इज व्हाट? इंडिविजुअल कस्टमर क्या बोल रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो पेट्रोल की हाइक प्राइसेस को भी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता. अब सपोज करो यहाँ पर तो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे. ओके, लेटर ऑन एक्सेप्शंस हैं, पर मैं आपको जस्ट यहाँ पर वन एग्जांपल दे रही हूँ. आई विल नॉट एक्सटेंड दिस टॉपिक ओवर हियर, बट द एग्जांपल इज इफ समबडी कैन अफोर्ड रोल्स रॉयस, उसके लिए पेट्रोल का हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस वोंट मैटर. So that depends on your affordability, like how much you can afford actually. So there is a different case altogether. So that is an exception.
सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का प्राइस भी, मतलब वो दूसरे की भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, एक का प्राइस बढ़ने पे उसकी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो ही जाएगी, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड। फिर अदर प्रोडक्ट की भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी। सो पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ते हैं जनरली, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो भी कम होती है और पेट्रोल कार्स की भी डिमांड कम होगी, पीपल विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन द डीजल कार्स, बट इट विल डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर हम वो सेट्रस पैरिबस सिचुएशन लेके चलेंगे दैट एवरी अदर थिंग इज कांस्टेंट। तो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड सेज कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, एंड वो सेम होगा पेट्रोल के केस में भी एंड सेम होगा पेट्रोल कार्स के डिमांड में भी। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू डियर। You are anonymous, so I'm sorry I cannot take your name. So for this chatting, guys, like I really want to say you that you ask your queries over here. और I think परसों तक नहीं तो मैं ऐसे करती हूँ, like whatever the PDF and PPTs I have till now, like we had shared, this is the third PPT right now. So I will share that with the technical team and I will give the duty to the technical team to reach to you. Okay, so because अगर वो group बना देते हैं तो मैं सीधा एक ही जगह पर post कर दूँगी। Branch code example Google Classroom. Why will I take the Google Classroom for this separately, dear Aparna? Because that is given in like team में हम लोग क्लास ले रहे हैं, so I cannot separately provide the Google link. मैम सिलेबस क्या है? ओके, आप लोगों को अभी तक सिलेबस भी नहीं पता है, so that's the thing. So मैंक्यू के साथ I will share the syllabus PDF also, but syllabus के लिए go to the SOL website, there is a available syllabus. आप लोग अभी तक अगर वेबसाइट भी सर्च नहीं कर रहे हो, वेबसाइट पे इवन यू कैन गो टू द DU वेबसाइट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू द लाइक SOS वेबसाइट, यू कैन गो टू द DU वेबसाइट, DU की वेबसाइट पे सिलेबस सब जगह अवेलेबल है। सो प्लीज डू दैट होमवर्क फ्रॉम योर साइड एटलीस्ट, एंड इवन जब आपको सिलेबस मिलेगा तो आपको रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, एंड मैंक्यू की रीडिंग अगर आप आई थिंक गूगल करेंगे तो मे बी यू कैन फाइंड इट। ओके, don't ask me what is the syllabus, that is means you are not doing your duty, guys. You have to do your duty from your side. website पे जाइए एक बार and just check the syllabus over there. It's blur ma'am. Okay, अभी तक मतलब सिंपल एक पर्सन को नेटवर्क ग्लिचेस हो सकते हैं, सॉरी समथिंग। गाइस मैं ऐसे करती हूँ, अगर मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में PDF भी खोल कर रख दूंगी, फर्स्ट मैं PDF करूंगी क्योंकि दैट डिपेंड्स, आज भी मैंने हॉटस्पॉट से इसको कनेक्ट किया हुआ है। So sometime we face the problem because of the online classes we have, you know, sometime Wi-Fi is not working, sometime electricity is a problem, it's in Delhi and it's happening nowadays. So जैसे ही मेरे पास Wi-Fi का अच्छा कनेक्शन होता है I will share the PDF also. Okay, PDF कैसे मिलेगा क्लास के? बच्चा ये PPTs आपको मिल जाएंगी, don't worry at all. Okay, I'm just waiting for this to go down. Car prices should decrease, but it is increasing, so the concept of the complete. Okay, मिलेगा मैम। right now the petrol prices are rising according to complementary good theory. car prices should decrease, but it is decrease. car prices नहीं, car prices का क्या मतलब है? कार डिमांड, कार का जो पेट्रोल कार की जो डिमांड है, we are saying, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कहती है, अगर किसी पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी का प्राइसेस बढ़ रहा है तो वाई कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सब्स्टिट्यूट के केस में वी वर टॉकिंग अबाउट, तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, यहाँ पर अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो एक्स कमोडिटी की कमोडिटी डिमांडेड चेंज ना होकर वी विल शिफ्ट टू द अदर कमोडिटी, तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक का प्राइसेस बढ़ रहा है तो दूसरे की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। So just be clear in the concept. First substitutes and complementary goods. Okay, it is not car prices we are talking about. We are saying that price will increase and the quantity demand will decrease. Okay, guys. The question, I think then we will go for the class. Here PPT. मैं simple wait कर रही हूँ कि technical team मुझे एक link दे दे group का, and I will definitely do it, guys. Okay. Don't worry. Don't be in panic. मैंक्यू की book search करो एक बार. Okay. Yes, medicine instance of elasticity of demand. Yeah, medicines की भी देखो perfectly inelastic होती है. We have to take the medicine perfectly elastic. Maggie की. Okay, मतलब that is a very cute answer otherwise. Maggie की perfectly elastic means whatever the price and the demanded can be changed, you know, but that depends. वो भी perfectly elastic demand तो हम किसी की बोल ही नहीं सकते हैं. अगर prices Maggie का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो definitely we will not go for that. We will go for the other substitutes. But medicines के केस में आपने सही बोला, that is perfectly inelastic demand, because if we are sick we have to purchase the medicine, we cannot avoid it, और जितनी medicine बोली है उतनी ही ले सकते हैं, so that is a very good example, good one dear.
What is Jonas? Okay. Yeah, the good one. Luxury fruits such as kiwi and the package are perfectly elastic. Change हो सकती है. Why? वो सोचेगा मैम कैन यू सजेस्ट एनी बुक फॉर माइक्रो. मैंक्यू की बुक है. मैंक्यू. ओके, हम अगेन सेइंग मैंक्यू की बुक है. अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है दैट इज वेल अवेलेबल, लाइक वेरी वेल. और अगर नहीं होता तो देन देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए. अच्छा, टेक्स्ट इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ग्लिचेस वी कैन फेस द प्रॉब्लम्स. ओके क्लियर? सो ठीक है. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एग्जांपल लग्जरी गुड्स. यस, ज्वेलरी डेफिनेटली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होगी उसकी, क्योंकि ज्वेलरी की अगर ज़्यादा प्राइसेस हो जाते हैं तो चेंज ज़्यादा हो जाती है उनकी डिमांड. मैम प्लीज गिव मी द गूगल क्लासरूम कोड. क्लासरूम कोड कहाँ से आएगा? वी आर टेकिंग द क्लास ओवर हियर. देखो गाइस, अभी तो मतलब मैक्सिमम अभी तो ऑनलाइन ओबी ही चल रहे हैं, बट जैसे ही कोविड की सिचुएशन अगर नॉर्मल रहती है तो डेफिनेटली वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है. डिफरेंस बिटवीन इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक. इनइलास्टिक मींस टोटली इनइलास्टिक, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती है. रिलेटिवली इनइलास्टिक मींस थोड़ी चेंज हो सकती है, फिर थोड़ी नहीं हो सकती. समझ रहे हो ना? लाइक यू नो लेस देन 1. और बिल्कुल इनइलास्टिक है तो मतलब 0. ठीक है. लाइक एक तो मूव बहुत धीरे कर रहा है एंड वी आर जस्ट लूजिंग आवर टाइम, सो इट्स बेटर. या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? Marshall has evolved the total expenditure method to measure the price elasticity of demand. According to this method, elasticity of demand can be measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of the goods purchased and the total amount of money spent on it. तो वो बोल रहे हैं कि हम इंडिविजुअल की चेंज इन डिमांड कैसे देखेंगे. सो हम चेंज इन डिमांड देखेंगे, हाउ मच मनी ही स्पेंड्स ऑन इट आफ्टर दैट. अगर किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस चेंज हो जाता है और उसका एक्सपेंडिचर उस पर बढ़ जाता है तो मीन्स वहाँ पे इलास्टिसिटी चेंज नहीं हुई. नहीं तो वो क्वांटिटी डिक्रीज कर देता तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता. सो मार्शल ने बोला एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी वी कैन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी. सो टोटल आउटले अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड. तो टोटल आउटले कितना है, मतलब टोटल इनकम कितनी है अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड. We will calculate this like this. Okay, so if with a fall in price demand increases, the total expenditure increases, or with a rise in prices demand falls, so the total expenditure falls. अब suppose करो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, with a fall in price total expenditure increases, or with a rise in price total expenditure falls. तो मतलब जैसे ही हमारा जो प्राइस है, if a fall in price कम होता है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, we tend to परचेज मोर ऑफ दैट गुड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. सो उसमें अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, सो किस तरह की इलास्टिसिटी होगी. और अगर हमारा प्राइस राइज हो जाता है तो हमारी डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो गया. सो इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. सो सपोज करो अगर हमारा प्राइस के साथ प्राइस बढ़ने पर हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, देन वी आर सेइंग दैट इज इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. तो यहाँ पर इलास्टिक सप्लाई है. If with a rise or fall in the price, demand falls or rise respectively, the total expenditure remains the same, the demand will be unitary elastic or like बिल्कुल is equal to 1. So अगर expenditure same rate में बढ़ता है या कम होता है तो definitely we will have unitary elastic supply or that elasticity. If with a fall in price demand rises, the total expenditure also falls. तो यहाँ पर मतलब अगर fall in price हुआ पर डिमांड भी बढ़ गई पर टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ा. प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट की, बट हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा. सो दैट मीन्स लाइक दैट इज इन इलास्टिक डिमांड. सो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी दैट विल बी लेसर देन 1. आई थिंक स्क्रीनशॉट्स तो आई थिंक आप ले रहे हो गए, मतलब स्लाइड्स के टिल नाउ, बट या डेफिनेटली आई विल लव टू शेयर दैट. सो द मेथड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ डॉक्टर मार्शल. इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. It is also known as percentage method, flux method, or ratio method, or arithmetic method, or whatever. Okay. So the formula we had already discussed, that is a percentage change in the quantity demanded upon percentage change in the price of that commodity, and that we had already shared this slide earlier. So change in a quantity demanded upon original quantity into 100, that will be a percentage change in quantity demanded. So this formula you have to remember because you will be given by the values, like values दे दी जाएंगी आपको एग्जाम में, and then you have to just put it and आंसर आपको देना होगा. Okay. अब देयर इज अ पॉइंट मेथड आल्सो, ज्योमेट्रिकल मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी को. सो क्या होता है ना, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये जो कर्व दे रखा है
यहाँ पर मतलब जस्ट आपको अगर इलास्टिसिटी को याद करना हो कि एट एवरी पॉइंट क्या इलास्टिसिटी होगी, सो यू विल जस्ट रिमेंबर मिडिल पॉइंट जो होगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो दैट इज लाइक इनफाइनाइटी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है मोर देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। बिल्कुल अपोजिट केस में जैसे हम नीचे जाएंगे मिडिल पॉइंट से, वी विल हैव लेस देन 1 इलास्टिसिटी एंड फिर हमें 0 इलास्टिसिटी हो जाएगी। So that is the point method, like on which point we will have what sort of elasticity, so that you can just remember. This is also given by Dr. Marshall, used only for the reference of a linear demand curve. इसको हम बोलते हैं linear demand curve, okay, because it's a straight line. Now yeah, so income elasticity of demand और देख लेते हैं एक बार. Income elasticity of demand is the degree of responsiveness of the quantity demanded of a commodity due to the change in consumers' income, other things remaining constant. तो हम यहाँ पर प्राइसेस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बोल रहे हैं इफ आवर इनकम विल इंक्रीज वी विल डिमांड मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इफ द प्राइसेस और इफ द इनकम डिक्रीजेस वी विल रिड्यूस आवर परचेजिंग बिकॉज हमारी अफोर्डेबिलिटी अब कम हो गया। यहाँ पर हम प्राइसेस को कंसिडर नहीं करेंगे और अदर थिंग्स को वी विल कंसिडर रिमेनिंग एज कांस्टेंट, ओके क्लियर? So in other words, it measures how much the quantity demanded changes with respect to your change in income. That is a simple income elasticity of demand. Okay. So यहाँ पर formula भी क्या होता है? The income elasticity of demand is defined by percentage change in quantity demanded upon percentage change in consumers' income. So that is it for now. I'll just see if you had written some more questions, guys. So technical team. Technical team, if you can just unmute your mic, I really want to say something in front of the students. If you can just unmute yourself, Naresh ji or anyone. Yes, ma'am. Yes, one thing. When will be the group? Be there? Like because we have to make the first year group, so I can share at once like all the PDF and all the PPTs. So when can we have that group link? मैम आप एक इसका अपलोड का मिलेगा अपलोड के लिए ऑलरेडी है। मैं बोल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को मुझसे कम्युनिकेट करना होता है तो डेफिनेटली टीम पर वो चैट कर देते हैं चैटिंग के लिए, बट हर इंडिविजुअल का अलग अलग मैसेज आ रहा है, सो अलग अलग मैसेज में अलग अलग रिप्लाई करना इट्स वेरी हार्ड। सो अगर कोई एक ग्रुप आप टीम पर बना दें तो हम लोग एक ही जगह पर उनको रिप्लाई कर देंगे बच्चों को, और डेफिनेटली दे कैन हैव ऑल द थिंग्स ओवर देयर इटसेल्फ। इस तरह का ग्रुप ना जो टीम नहीं बन पाता है, या ऐसा होता है कि स्टूडेंट से ग्रुप बना ले, आप एडमिन का मैसेज जो बच्चे कैरी करेंगे तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो टीम पर ग्रुप बना सकते हैं बच्चे अपना, टीम पर ही? मैम टीम पर नहीं होता, टीम से आप ग्रुप नहीं बनते, उनको इंडिविजुअली अपने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे इस तरह से। अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुप, ओके। हेलो हाँ नेहा, हाँ जी बताइए। हाँ मैम विनोद बोल रहा हूँ टीसीपी से। मैम टीम पे ऑलरेडी एक ग्रुप बना दिया है। बना दिया आपने फर्स्ट ईयर का? जी ओके ठीक है, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा एक बार चैट में। जरूर ओके थैंक यू। तो ठीक है गाइस, आप लोगों की प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो गई है, सो आई विल शेयर, अगर लिंक हमें अवेलेबल हो जाता है तो आई विल शेयर द पीडीएफ एंड पीपीटीज ऑल देयर, ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी, ओके। आई थिंक चैट बॉक्स में पब्लिश करना इट्स लाइक थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लगेगा, सो गाइस आई होप यू विल वेट टिल देन। ठीक है, क्लास एंड करते हैं अभी। इलास्टिसिटी वी हैव डन और अभी ग्रुप बन गया है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ओवर देयर, ओके। ठीक है, सर एंड कर दीजिएगा क्लास। टेक केयर गाइस, बाय बाय।